can see that we are doing the Palestinian and the Palestine stories this week. So one thing I want to make sure that you can actually fill in the blank which I just put on my various platforms anytime until this week ends, जब तक ये यानी कि फ़लस्तीन का हम इशू या फ़लस्तीन के बारे में या फ़लस्तीनियों के बारे में मैं आप लोगों से बात करती रहूँगी. So it will remain there until this ashra ends, because I want कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो जो मेरा मैंने गिफ्ट देना है, they can get benefit from that. So it will be a free gift, and just all you need to do is just give me one reason that why this slogan is used, and uh, just fill in the blanks. So today's live is actually inspired by a story which I was actually hearing it, which I heard live with my little one through Noor Kids. They actually explained that the Palestinian issue in a very elaborative and in a very sensible and appropriate, age appropriate way to the kids. So I got really inspired. I actually watched that video 4 times, and I actually had 2 key takeaways out of that. So one is what is today's show is also based on one of those key takeaways, and tomorrow we are going to do the other key takeaway that I had. So फ़लस्तीन से जुड़ी जो रील्स हैं, जो वीडियोस हैं, हम रोज़ अपने मोबाइल फ़ोन्स में देखते हैं. अब हमारे सामने है कि जिस हाल में एक बच्चा उससे कहत से, खाने की कमी से, जिस वजह से वो फौत हुआ, शहीद हुआ बल्कि, तो इस तरह के और कई से बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जो वहाँ पर रोज़ इसी तरह अपनी जान से जाते हैं. इसके अलावा नौबत ये आ गई है कि जो इर्द गिर्द के मुफ्ती हैं उनकी तरफ से फतवे जारी होना शुरू हो गए हैं कि दे कैन ईट cats and dogs in a limited amount because there's no other food that they can consume, but they are preferring कि या तो वो खुद उगाएं और या तो वो घास खा लें. So something which is more near to halal. So this is what their preference is. They are just choosing that over the fatwa. So अब जो पानी है, जैसे अब फॉर एग्जांपल पानी है, पानी जो बारिश का पानी है वो आता है, बारिश होती है तो उसको वो स्टोर कर लेते हैं. सो पानी इस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं, राइट. तो अब हम चलते हैं उस थीमेटिक मैसेज की तरफ जो कि फर्स्ट टेक अवे जो उसकी मैंने बात की. तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ लिटिल समरी ऑफ द स्टोरी, एंड देन वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस कि मैंने उससे क्या सीखा. So the story goes on like this, that there was a farmer but who died, and his family, basically he was martyred in one of the attacks by the Israelis. All right. And the kids which were left behind, one was like small and has an elder sister. They lived with their mom on a roof in a tower, and their house was quite above, like it was maybe in the top story, right? So over there they had their roof garden. So from there I actually came to know that actually many of the Palestinians do that, because the narrator over there was also Palestinian. So I actually came to know कि फ़लस्तीन में ये चीज़ बड़ी आम है, रूफ गार्डन्स एंड एवरीथिंग, दे ग्रो देयर ओन आइटम्स. बट व्हाट हैपन्स इज दैट the drones are sent
ताकि वो उसके ऊपर केमिकल्स डालें और केमिकल से फसल ख़राब हो जाए या जो उनका खाना है वो ख़राब हो जाए. बट दे कीप ऑन ग्रोइंग, they don't want to give up, they keep on growing, they don't want to give up, with the hope that one day they will have a big garden to see. जो उनके बाप ने ये वॉल खड़ी करने से, गाजन जो वॉल खड़ी की हुई है गाज़ा में, उस वॉल खड़ी करने से पहले जो दूसरी वॉल की दूसरी साइड पे जो गार्डन बनाया था हम उसको देख सकेंगे. विद दिस होप, सो दे होप फॉर दैट. एंड हियर द स्टोरी एंड्स, that they are not giving up, they are not tired enough, but they get self sufficient to grow. तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि हमारी अफ्तारियाँ जिस तरह होती हैं और बाज़ जगह तो सहरियाँ भी, हम ना बहुत एहतमाम करते हैं. एहतमाम करना भी चाहिए कि माह रमज़ान आया है तो साल में एक दफ़ा आता है, तो इस वजह से हम एहतमाम करते हैं. वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर रमज़ान, लाइक आवर टेबल इज़ fully decorated with the foods and the variety. तो असल में बात यह है कि इस स्टोरी से जो मुझे एक चीज़ नज़र आई कि इंसान का मकसद, और रमज़ान का ख़ास तौर पे मकसद, खाली पेट पूजा का नहीं होता. वो सब नॉर्मल भी हो सकता है. अब जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनका खाना पीना, चाहे उनके सहाबा कराम हैं, उनका खाना पीना, जब हम उनकी सीरत वगैरह पढ़ते हैं, उनकी लाइफ्स पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इट वाज क्वाइट सिंपल. बहुत ही सिंपल लिविंग थी, राइट. अगर मकसद सिर्फ ये बन जाए, ज़िंदगी का मकसद अगर आप सिर्फ इसको बना लेते हैं ना कि हमने सिर्फ खाना पीना है, तो उससे क्या होता है? इसको हम कहते हैं हिर्स. हिर्स इंसान के अंदर बन जाती है. और जिस शख्स के अंदर खाने पीने का हवस या हिर्स पैदा हो जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूहानियत को भी ख़राब करती है. आपकी हवस बन जाता, वो चीज़ हवस में बनना शुरू हो जाती है. और जब वो हवस बनना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर जो हिर्स है वो आपके खाने तक है, जो हवस है आपकी रूह तक है. और जब फिज़िकल और रूहानी आपका एक शुरू हो जाता है काम, तो एक टाइम पे माली तौर पर भी ये चीज़ एक्सट्रीम पकड़ती है. एंड दैट्स कॉल्ड लालच, इसको हम लालच कहते हैं. तो ये स्टेप्स हैं कि व्हेन यू वांट, ये तीनों जो लफ्ज़ हैं, हिर्स, हवस और लालच, ये बेसिकली है दैट यू ऑलवेज वांट मोर. आपको ज़्यादा भी कम लगता है, दैट्स वाई यू वांट मोर. You don't think that everything is enough. You don't feel the feeling of fulfillness जो हमने पहले डिस्कस किया. It's just because one of the reason is the food. It is the food. Alright? So इससे क्या होता है जब हम खाने पीने में लग जाते हैं? एक तो ये चीज़ जो मैंने आपकी हर्ष और हवस और लालच बताई, दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है? ऑन द सेकेंड हैंड, जो आपका असल है उसकी तरफ ध्यान हट जाता है. आप खुद सोचें कि बहुत से लोग, हम में से हम बहुत से लोग क्या करते हैं, अफ्तारी कर रहे होते हैं और अफ्तारी में शायद नमाज का वक्त गुजर जाता है, या हम अफ्तारी इतनी कर लेते हैं कि वी आर रियली हार्ड, इट्स रियली हार्ड टू गेट अप एंड डू समथिंग एल्स, राइट. हम लेज़ी हो जाते हैं. So it makes you lazy. One of the reason जो हम आज मटेरियलिज्म की दौर पर लगे हुए हैं, it is just one of the reasons कि हमारा जो रुझान है वो पेट की तरफ ज़्यादा हो गया. लेकिन रमज़ान का मकसद it's not about this only. It's better to go for simple living, towards simple life. It's a practice towards simple life so that you can enjoy life more,
through connecting and reconnecting with Allah subhanahu wa ta'ala. And how is that possible? बेसिकली एहतमाम की बात की ना मैंने कि एहतमाम करना चाहिए, तो एहतमाम हमें किस चीज़ का करना चाहिए? हमें अल्लाह से जुड़ने का जो एक बेसिकली जिसको हम कहते हैं फीडिंग योर सोल, सो उस चीज़ का एहतमाम करना है हमें. यू हैव टू फीड योर सोल इन रमज़ान. So this Ramadan is basically different for all of us, right? We should learn to control our stomachs. It triggers emotions and other things. Eating habits help us to see more, to act more. अगर हम अपनी eating habits को नहीं देखेंगे ना, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे actions जो है ना, they might get lazy. हम थोड़े से reckless हो जाएंगे. We won't be more vigilant. मगर एक सवाल है कि when I heard this story ऐसा लगता है कि वो कम में भी मुतमईन है. ऐसा क्यों है? They still say hasbunallah wa ni'mal wakil because they know he will provide, and he does. They still prefer anything halal. वो अभी भी हलाल को preference दे रहे हैं. They don't want to go for haram side. Why? Because if they will obey Allah, they will see positive consequences. उसके positive असरात होंगे. लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी उस चीज़ से हिलते हैं, they fear, like out of love they fear that they might contaminate their souls. So they don't want to contaminate souls by listening to anything and following other than Allah, except in the really harsh conditions. And that also again with limit. वो भी वो limit के साथ करना चाहते हैं. So let's not contaminate our souls and be thankful. और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक चीज़ आज नहीं बनी अफ्तार में जो आपकी फेवरेट है, तो लड़ाई भी की जाती है. कम बन गया खाना तो उस पर भी लड़ाई, लाइक सवाल होता है कि आज कम क्यों है, ये चीज़ कम क्यों है. तो इस तरह के लाइक we do a lot of complaint on the table, although we have a lot of things on the table. So try to be thankful and do not come. इस तरीके से thankfulness से क्या है, it is one of the ways कि आप अल्लाह से करीब भी होंगे, and that means कि your soul might get washed, right? So that is it for today. Inshallah, I'll meet you tomorrow with the next theme and the next takeaway I took from this story. थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ आ ही गया होगा. So inshallah, stay tuned. Allah Hafiz and fi aman.